Now we will discuss about some salts which are in the class 10 syllabus and how they are prepared and what are their different uses. So first of all we will discuss about the common salt. Now common salt actually it is a ionic compound, number one, and chemically what we call it, chemically the name is called sodium chloride. जो आप अपने फूड में डेली डाइट में यूज़ करते हैं, ये इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ आवर फूड. सो highly purified sample of this is given the formula NaCl, and because it occur in an aggregate of large number, that is large number of compounds, they are molecules are combined together, so general they can be written in the formula NaCl and n number of molecules they are attached together. So is it clear to you? So it is also called the table salt. Many names are there. It is also called the rock salt. So as it is obtained from the rocks, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं. तो ये जो है हमारा जो सॉल्ट है, ये मेन सोर्स है हमारा कॉमन सॉल्ट जो है कहाँ से मिलता है, सी वाटर से. कि सी वाटर में जो है ये अब नियर अबाउट 3.5% जो है सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, एंड मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज़ ए सोडियम क्लोराइड. और भी सॉल्ट्स हैं लेकिन सोडियम क्लोराइड है 2.7 से 2.9% जो है अवेलेबल होता है. तो ये हमारे जो है इंडिया में जो है मेनली जो है इंडलैंड लेक्स में, जैसे सांभर लेक है जो राजस्थान में प्रेजेंट है, गुड सोर्स है हमारे कॉमन सॉल्ट का जो है, या जो है ये रॉक से भी जो है उठाए जो है मिलता है, तो इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं. और जैसे गुजरात के एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पर बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट मिलते हैं, और लेक्स में जो पास्ट में जो है ड्राई अप हो गई हैं, वहाँ से भी जो है हमें जो है ये सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. ये जो सॉल्ट है बहुत ही जो है कमर्शियल यूज़ है इसका, रॉ मटेरियल जो है कि यूज़ किया जाता है बहुत से प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो कॉमन सॉल्ट जो है हमारा क्या है, दैट इज़ ए रॉ मटेरियल, and to make the many chemicals like we are having sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है अगर हम कमर्शियली बोलें तो हम इसको जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं. और वैसे इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपने पढ़ा है इसके बारे में कि it is a basic in nature. Similarly we get the bleaching powder and its formula is calcium oxychloride. हमने इसको जो है स्टडी किया था अपने प्रीवियस सेक्शन में कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ए मिक्स्ड सॉल्ट, सो इट इज कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर. एज द नेम सजेस्ट, it is used for bleach purpose in the cloth industry, dye industry, in making paints, as a disinfectant. So many uses are there, and its chemical name is calcium oxychloride. So you have to keep their common name as well as chemical name in the mind. Then next, the material which can be formed by common salt, that is a sodium hydrogen carbonate. It is also called the sodium bicarbonate. So common name is common name is it's that is baking soda, and the chemical name is sodium
bicarbonate, or we can say it sodium hydrogen carbonate. Is it clear? Then we are having the next, that is a sodium carbonate, Na2CO3. Its common name, which is used for the washing purpose, that is washing soda. So its chemical name is sodium carbonate. Like this, we will study about many more substances. We are having the POP. POP is a common name. It is used for the plaster, which is called plaster of Paris. So it is also used for many purposes in the medical line, or you can say in the, we are having making the statues in the pottery work. We prefer use this one, POP, and it is prepared from the gypsum, that is calcium. It is actually calcium sulfate hemihydrate. Hemi means half water molecules are present here. So we will discuss in detail about these salts.